Hi, my name is Utkarsh Jain. I'm a third generation entrepreneur in Northeastern Carrying Corporation Limited. We started with a new venture called SG Green Logistics. It is focused on logistics through electric vehicles. Company focused entirely on EV trucks. So we are procuring electric vehicles from IPL Tech and we are deploying them majorly in the steel and cement industry. The idea came when we were talking to few steel and cement companies and their consciousness regarding the ESG, and they needed a solution wherein they could electrify their supply chain ecosystem. So we placed an order initially of about 50 vehicles, and we started with few steel companies, and that is when we realized that the capability of the vehicle is actually far superior than a typical ICE vehicle. So we already have about 100 vehicles which are currently operating and running, and we plan to add about 150 more trucks in this financial year. The operational benefit that I see over ICE vehicles is the cost of electricity and the kilometers, the average unit consumption per kilometer. It more or less accounts to about 50% or typically more in certain cases compared to ICE vehicle, and the maintenance cost is also, I would say, comparably cheaper and more effective because the AMC team of Rhino electric trucks is always present on the project side, and they ensure an uptime of about 99% for these vehicles. The driver feedback is pretty good. They are very happy driving these trucks, more so because they do not have any manual gears, and the effort needed to drive these trucks is far less compared to a ICE vehicle. They have deployed their team on all our sites wherever these trucks are operating pan-India, and their team are available 24/7. So my trucks practically do not have to suffer or stand due to some technical or mechanical failure, right? Because team is always there to support and make sure that the truck is back on track. I would definitely like to recommend IPL Tech Rhino electric trucks to other fleet operators as well. It is definitely something worth trying. It can add up to big savings for my fellow fleet operators. मेरा नाम रितेश भाई है और हम लोग 3 ब्रदर हैं, गोविंद भाई, महेश भाई। हमारा ट्रांसपोर्टेशन का काम है। हमारा फर्म है देव रोडवेज, जो कृष्णा ग्रुप के अंडर में है। हमारे पास अभी 65 ट्रक्स हैं, उसमें से 10 व्हीकल हमारे पास IPL ट्रैक कंपनी के रेनो 5536 मॉडल है, जो हमारे ट्रक्स अभी गुजरात हेवी केमिकल सूत्रापाड़ा से पिपाओ पोर्ट पर चल रहे हैं। पहले तो हमारे पास IPL टेक इलेक्ट्रिक की टीम आई थी, उन्होंने हमें ये गाड़ियों का सजेस्ट किया और डेमो दिखाया था। यहाँ पर उनकी ट्रायल बेसिस पर IPL की एक राइनो 5536 लेके आए और उससे यहाँ से हमने पोरबंदर लाइन पे ट्रायल बेसिस पे 1 महीना गाड़ी हमने ट्रायल किया। ट्रायल करने के बाद हमें ऐसा लगा कि भाई इसमें हमें पढ़ना चाहिए। उस हिसाब से हम वहाँ पर 3 ट्रक पहले हमने IPL ट्रैक की राइनो 5536 मॉडल लिए, तो फिर हमने आगे 2-3 महीने 3 ट्रक चला के उसके बाद हमने ये दूसरी ट्रक 7 परचेस की। अभी हमारे पास टोटल 10 ट्रक्स है IPL ट्रैक की। डेली का 300 किलोमीटर रनिंग कर रही है गाड़ियाँ, और मंथली मैक्सिमम 10 से 11 हज़ार किलोमीटर गाड़ियाँ चल रही है। ड्राइवरों की बहुत बड़ी शांति हो गई है। ड्राइवरों का कहना यह है कि हमें उसमें गियर चेंज करना नहीं है, क्लच दबाना नहीं है। एक बार ऑटो गाड़ी है, ऑटोमेटिक चल रही है, और इसमें लोड होने के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारी गाड़ी लोडिंग करके जा रही है। एकदम स्मूथली रनिंग गाड़ियां कर रही हैं। ड्राइवर को थकान महसूस नहीं होती है कि आज मैं थक गया हूं, मैंने 2 चक्कर लगाए तो मैं आज एक दिन छुट्टी करूंगा। उसके मुकाबले में डीजल की गाड़ी में हम जाते हैं तो डीजल की गाड़ी हमारी एक ट्रिप मार के आती है तो दूसरी ट्रिप वो ड्राइवर नहीं जाता है। इलेक्ट्रिक गाड़ी रेनो का हमारा डीजल की गाड़ियों के कंपेरिजन में 65 to 70% हमारा रनिंग कॉस्ट कम आ रहा है डीजल के मुकाबले में। का IPL टेक का जो टेलीमेट सिस्टम है वो आने के बाद हमें एक अच्छा वो हो रहा है कि भाई हमारी गाड़ियाँ कहाँ पर खड़ी है और कितना मूवमेंट हमारी गाड़ियाँ कितने घंटे स्टॉप करती है, कितना घंटा हमारी गाड़ियाँ लोडिंग में खड़ी रहती है। फिर हमारी जो बैटरी की SOC कितनी है गाड़ी के अंदर, वो भी हम उसमें देख सकते हैं कि ड्राइवर अगर कुछ भी आगे पीछे करता है तो हमें यहाँ मालूम पड़ जाता है कि भाई इसके ड्राइवर के चलाने में कोई दिक्कत है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इस सॉफ्टवेयर से। हमारी गाड़ियाँ रात को 2 बजे भी कहीं ब्रेकडाउन हुई तो उनके एम्प्लॉयज़ IPL के 24/7
हमारे पास ही खड़े रहते हैं कि भाई हमने जैसे ही उनको कॉल किया उसी समय वो गाड़ी के लोकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे के अंदर गाड़ी के कोई भी साइड लोकेशन पे 1 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं, अगर किलोमीटर ज़्यादा हुआ तो। हमने गुजरात के अंदर सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रकें ली और सबसे पहले हमने एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया है इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके कार्बन डाइऑक्साइड कम करने की लाइन पे। हमें ऐसा लग रहा है कि आगे जाके हमको देख के कोई भी दूसरे हमारे ट्रांसपोर्टर ऑपरेटर भाई हैं जो हमें फ़ायदा हो रहा है, वो आगे वो लोग भी ये इस लाइन पे विचार करेंगे कि भाई हम भी इलेक्ट्रिक लाइन पे जाएं। ये सब हमें आके पूछते हैं हमारे ट्रांसपोर्टर भाई कि भाई ये गाड़ी लेने में क्या फ़ायदा है क्या नहीं, तो हम उन्हें ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि भाई आप ये गाड़ी एक बार लीजिए, आपको जो बहुत बेनिफिट मिलेगा इसमें डीजल के मुकाबले पे, और आपका जो कॉस्टिंग है सर्विस का और जो खर्चा है वो आपको 65 to 70% सेव हो रहा है। मेरा नाम महेश करंगिया है और मेरा कंपनी का नाम है कृष्णा ग्रुप। उसके अंडर में देव रोडवेज, पार्थ EV ग्रीन लॉजिस्टिक करके हम काम कर रहे हैं GSL में। मेरे पास 65 व्हीकल है, उसमें से 10 व्हीकल हमारे IPL टेक के हैं। इलेक्ट्रिक आने के बाद हमको एक फ़ायदा तो हमारा ड्राइवर का है कि जो हम डीजल गाड़ी में ड्राइवर को बार बार छुट्टी पे चले जाते हैं, दूसरों की गाड़ी चलाते हैं। जब ने हमने इलेक्ट्रिक ख़रीदा है, इलेक्ट्रिक के ड्राइवर आने के बाद जो ड्राइवर आए अभी तक चला रहे वो भी खुश है, हम भी खुश है, क्योंकि ड्राइवर को ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, गियर लगाना, क्लच लगाना, और गाड़ी में दूसरा मोटर और बैटरी के अलावा दूसरा कुछ है नहीं, तो इंजन का खर्चा जो मेंटेनेंस है वो कम है। डीजल व्हीकल के तुलना में हमारा IPL जो मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका 65 से 70% कम खर्च आ रहा है, और डीजल चोरी का जो था वो भी एक बात ख़त्म हो गया। IPL की जो सर्विस है और सर्विस की जो टीम यहाँ पे है उसको मैं 10 में से 10 अंक दे सकता हूँ, क्योंकि जब भी हमको ज़रूरत पड़ी, जब सपोर्ट चाहिए तब तुरंत मिलता है। यहाँ के लोग का मिलता है, आपका जो ऊपर बैठे हैं लोग साहब उसका भी पूरा सपोर्ट मिलता है। पहले 10 महीने पहले हमने 3 गाड़ी खरीदा IPL टेक का, उसको हमने 3-4 महीना रनिंग किया, उसका पूरा अनुभव किया। उसके बाद हमने फिर 4 गाड़ी और लिया, टोटल हमने 10 गाड़ी लिया है और हम उससे संतुष्ट हैं और आगे भी हम जुड़ना चाहेंगे। और हमारे जो यहाँ के ट्रांसपोर्टर भाई उसको भी बोलेंगे कि आप इलेक्ट्रिक में आइए और IPL के साथ जुड़िए, उसका सर्विस सपोर्ट भी बेटर है और इलेक्ट्रिक का आने वाले फ्यूचर में इलेक्ट्रिक का फ्यूचर अच्छा है। Hello everyone, my name is Atirav Gupta. My company's name is Lauls Limited, and we are a company primarily diversified into steel industry. One of our verticals is logistics and transportation. We have 250 total vehicles, 3 vehicles out of which are electric and rest are diesel vehicles. We've been running these vehicles for the last 8 months. When this truck was sold to me, of course, there was a big trial cycle that we went through where IPLT had a big task in convincing not only myself but all the stakeholders, maybe the driver, the person who's doing the loading, unloading, the safety teams of plants, and this was absolutely managed very well by their team. And what this has translated into after running the truck is a deep trust for the company. It has been better than we expected. All the estimates in terms of efficiency of electricity or the operational efficiency and the end profitability has been much better than we had planned for. There is a 70% saving of operational costs as compared to our diesel trucks. Trucks have been cumulatively able to clock more than 1 lakh kilometers. This is something that has outstripped our most optimistic of figures, and that is a testament to again the team and the uptime of the truck. It also is a very big factor for us that we've been able to save more than 115,000 tons of CO2 being expelled in the atmosphere. The company benefits primarily from 2 different factors when it comes to the total savings. First is of course the pilferage. In internal combustion engines we face a lot of pilferages that a transporter of course tries to control as much as possible. In electric what we have is an absolutely data driven truck. The kind of telematics that is provided gives us enough knowledge about the trucks to know what is exactly happening, where through the systems that IPLT has given us, we are able to know exactly what is the cost of the truck. With Montra electric Rhino trucks, we have had 99.5% uptime. 99.5% uptime even for a new diesel truck is something
which is hard to match. So the preventive maintenance that the team does over here, taking care of the vehicle at all times, trying to monitor it, try to see which parts could be preemptively changed or refurbished or seen what are the issues with it, that really helps to achieve that 99.5% uptime with the vehicles. And of course that uptime translates directly into profits for my company. At any point there is a single member of IPL Tech service team which is available at my yards. The kind of support that the team has provided, I feel that there is absolutely no need, and I can trust the team to make sure that the trucks are on road at all times, and that communication between their team and my team is absolutely seamless. The driver is very happy with our vehicles. They are feeling proud that they are running a newer technology. They do not have any need to go to the service center from time to time. The driver is especially thankful for the automatic clutch and transmission that exists in the vehicle, because our vehicles run within the city. Therefore, they do not have to change gear at any point. And moreover, the fatigue in this vehicle is much less as compared to internal combustion engine vehicles. The driver is happy also because the vibration in the whole truck is much lesser. It was of course a concern that the trucks are 3 times more expensive than diesel trucks. But once we looked at the operating figures and we had a long-term view over our business, we realized that actually there is no hesitation to buy these trucks, because the operating cost is something that's not going to increase over the life of this particular truck, because day in and day out you are earning more than 70% of saving through the operating expense. So I see electric truck only as a win-win-win situation for all stakeholders. Of course, the saving in scope 3 with the ESG norms coming in, that is massive for the customer, and that is going to be a kind of saving that they're going to get repetitively for the next for the life of the truck. Of course, the benefits for the society is something that we do not even need to discuss. The kind of situations and the kind of AQI levels that we read about in newspapers every day. Only technology such as this is going to drive that particular nation forward. More than the truck, I think what it's important at this stage is to look at the kind of people and the kind of ecosystem that is behind the particular model. There is no other product which I could recommend apart from IPL Tech for electric trucks. My name is Aviral Jain. I'm a director, Hindustan Dockyard Private Limited. IPL Tech was the first such company which came out with the option of rolling out of electric vehicle trucks, and I take great pride in the fact that the 3 trucks which I bought from IPL Tech were amongst the first 50 trucks on a pan-India basis. We've deployed these 3 trucks with Hindustan Coca-Cola Beverages. Even they were very happy because it was a pilot project जो इन्होंने सिलीगुड़ी में स्टार्ट किया. अगर मैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करूं तो एज कंपेयर टू डीजल ट्रक्स द कॉस्ट इज एब्सोल्युटली लेस बाय अबाउट 85%. तो द कॉस्ट इज मच लोअर. इट इज़ अ वेरी हैसल फ्री मूवमेंट. हमारे ड्राइवर बहुत खुश हैं बिकॉज इट इज़ टोटली क्लचलेस ड्राइविंग. इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल ड्राइविंग विथ मच रिड्यूस्ड नॉइस. IPL Tech has been very supportive. They have provided an AMC which is very seamless. In fact, the trucks itself do not require much maintenance, but despite that, they have deployed one permanent person at Siliguri who's there 24/7 to look after the monitoring of these trucks. They've also kept spare parts inventory at Siliguri in case of any downtime, any issue. The trucks can be quickly redeployed and reactivated. I'm very happy with the kind of service which IPL Tech has provided. There is a team, they have got a very good IT management system for the monitoring of these trucks, for the running of these trucks. हर महीने के end पे I do get a report what has been the truck's utilization, what has been the uptime, and I'm very happy to say that while I was the first mover, but following me are big companies and big giants like Hindustan Zinc, Ultratech, which I know have now bought Rhino trucks. मैं डेफिनेटली सबसे कहूँगा दैट अपनी फ्लीट में उनको टू बिगिन विद एटलीस्ट 2 से 3 ट्रक्स 4 ट्रक्स से शुरुआत करनी चाहिए एंड सी द एक्सपीरियंस फॉर देमसेल्व्स. आई विश द टीम ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम श्योर द प्रोडक्ट विल डू वेरी वेल मूविंग अहेड.